Good morning, all of you. Today we are going to start our new topics, crop varieties improvement. Last class में हम लोगों ने कुछ different types of crop varieties, crop production and crop protections के बारे में, कुछ introductions के बारे में हम लोगों ने study किया था. इस क्लास में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग crop varieties में डिफरेंट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर एक तरीके से क्रॉप्स को, किसी भी क्रॉप्स को प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं. And by this maintaining of this crop, we can always find out a different prospects of to finding or to increase the varieties of the soil. So basically सबसे पहली बात हम लोग ये देखते हैं कि जो भी soil है, soil can be in fertile in nature. मतलब जितने भी हमारे पास soil present होगा, वो soil एकदम proper fertile होना चाहिए. मतलब उसकी fertility के कारण हम लोग एक तरीके से proper announcement करते हैं या फिर proper तरीके से हम लोग किसी भी क्रॉप्स को एकदम प्रॉपर तरीके से ग्रो कर सकते हैं. बिकॉज द फर्टिलिटीज ऑफ सॉइल ऑलवेज इंक्रीजेज द रिच इन न्यूट्रिएंट्स. मतलब हमेशा न्यूट्रिएंट्स को रिच करने के लिए प्रॉपर अमाउंट में हम लोग सॉइल को फर्टाइल करते हैं. ओके, तो दैट इज कॉल्ड हियर द क्रॉप वैरायटीज इंप्रूवमेंट. उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर क्रॉप वैरायटीज इंप्रूवमेंट. सॉइल कल्टिवेशंस, croppings, seeds varieties are the different facts through which we can always increase the varieties of the improvements. Okay, सबसे पहली बात कि जितने भी सबसे पहली बात देखते हैं हम लोग हायर यील्डिंग. हायर यील्ड्स मीन्स व्हाट, कि जितना बड़ा एकड़ होगा, जितने बड़े हेक्टेयर्स होंगे लैंड में, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, उतनी ज्यादा अमाउंट में क्रॉप्स की वैरायटीज क्या होगी, हमेशा इंक्रीज होगी. ओके, जितना ज्यादा इंक्रीजिंग एरियाज होगा एकर्स में या फिर हेक्टेयर्स में, उतनी ही ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज में हम लोग क्रॉप्स को लार्ज अमाउंट में ग्रोन कर सकते हैं. तो दैट इज कॉल्ड हियर द हायर यील्डिंग कैपेसिटी. ओके, इन हायर यील्डिंग कैपेसिटी देयर इज बेसिकली नीड्स ऑफ टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लैंड. जैसे से हम लोग यहाँ पर लैंड के सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पर एक तरीके से कोई भी क्रॉप्स को एकदम प्रॉपर तरीके से डिफरेंट टेक्निक्स में हम लोग इसको ग्रोन कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग हियर इम्प्रूव क्वालिटीज. जितनी भी इम्प्रूव क्वालिटीज के हम लोग बारे में बात करते हैं, जो भी इम्प्रूव क्वालिटीज के सीड्स का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे. बिकॉज प्रॉपर्टीज ऑफ सीड्स एंड द क्वालिटी ऑफ सीड्स इज रियली इंपॉर्टेंट. जितनी प्रॉपर तरीके से हम लोग सीड्स को यहाँ पर ग्रोन करते हैं, जितने प्रॉपर तरीके से हम लोग सीड्स की क्वालिटीज को चेक करते हैं, जितने प्रॉपर तरीके से हम लोग यहाँ पर सीड्स को या फिर क्रॉप्स की क्वालिटीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, मेजर्स करते हैं या फिर फील करते हैं. सो दैट इंक्रीजेज द वेराइटीज ऑफ द इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप्स. ओके, सो दैट कम्स इन द इम्प्रूव्ड क्वालिटीज ऑफ एवरी crop materials. Okay, it can be also improves these varieties of the soil, because the soil variety is really important other rest of the parts. ठीक है, क्योंकि soil की varieties होना बहुत ज़्यादा important होता है, क्योंकि different soil different season में different survival के लिए important होता है for a particular crops. Okay, किसी भी particular crops के लिए season, soil, water, sunlight is important. Okay, without these factors the soil cannot be a proper rich in the nutrients. So this is called here the improved qualities. Next is biotic and abiotic resistance. Biotic and abiotic resistance means what, कि जिसको हम लोग हमेशा अपोज करते हैं. That is called biotic and abiotic resistance. Biotic means which are getting respired oxygen. Abiotic means which are just inhaling the carbon dioxide. Okay, so these are the basic, because some of the plants and some of the different species of plants always respire the carbon dioxide. Okay, बहुत सारे प्लांट एक ऐसे होते हैं जो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड्स को रेस्पायर करते हैं, है ना, इनहेलेशंस करते हैं, एंड जस्ट दे आर जस्ट टेकिंग आउट द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. सो नेक्स्ट वी आर हैविंग हियर चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन. Change in maturity duration is also an important topics. Why this is important topics? Change in the maturity duration, because the time period is very long. Approximately one crop takes more than 4 to 5 months in a year. ठीक है, it means what, कि हम लोग एक साल में हमेशा 2 टाइप की क्रॉप्स को ही सोन कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे अगर सपोज कीजिए कि अगर हम लोग यहाँ पर एक साल में, एक ईयर्स में
चार टाइम या फिर 3 टाइम्स अगर हम लोग क्रॉप्स को सोन करते हैं, सो टर्निंग ऑफ सॉइल इज ऑल्सो इंक्रीजेस. ओके, benefit of for the farmer is also increases. We get different varieties of crops at a particular time, so there are very much different advantages of what changing in the maturity duration, because crop needs a time to get mature and for the harvesting processes. Okay, so as we are just changing the crops, the varieties of soil is also increases. ठीक है, जैसे जैसे हम लोग क्रॉप्स को चेंज करते हैं तो वैरायटी ऑफ सॉइल भी क्या होती है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज होती है. ओके, जैसे हम लोग वैरायटीज ऑफ सॉइल को चेंज करेंगे वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज में या फिर डिफरेंट टर्म्स में हम लोग यहाँ पर एक तरीके से प्रॉपर क्रॉप्स को भी ग्रोन कर सकते हैं. सो दैट इज बेसिक नीड, एक तरीके से हमारे लिए एक बेसिक तरीका है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड हियर द मैच्योरिटी ड्यूरेशन. अगर हम लोग मैच्योरिटी ड्यूरेशन को कम करते हैं तो एज मतलब मैक्सिमम अमाउंट मतलब मैक्सिमम टाइम्स हम लोग यहाँ पर क्रॉप्स को ग्रोन कर सकते हैं. अगर मैच्योरिटी ड्यूरेशन ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन पर हम लोग हमेशा क्रॉप्स को स्मॉलर अमाउंट में या फिर स्मॉलर ड्यूरेशंस में हम लोग रख सकते हैं. ठीक है, ड्यूरेशन इंक्रीज करने से या फिर ड्यूरेशंस कम करने से मैच्योरिटी लेवल कम होगा. इसका मतलब व्हाट कि हम लोग एट अ ईयर मतलब एक साल में हम लोग 3 to 4 टाइम्स क्रॉप्स को चेंज करके 3 to 4 टाइम्स क्रॉप्स को बदलकर हम लोग यहाँ पर एक तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को फॉर्मेशंस कर सकते हैं. दैट इज द बेसिक नीड्स ऑफ चेंजिंग इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन. नेक्स्ट इज वी आर हैविंग हियर वाइडर एडाप्टेबिलिटीज. What is the one thing that fuels the human body? What is that one thing we work for? What is that thing living organisms cannot survive without? Yes, it's food. And where do you think we get food from? Plants and animals? Yes, both these provide us with food, and food in turn gives us energy. How do we get food for ourselves? Do plants grow by themselves? Or is it that animals wander about and provide us with the food we need for living? As we know, this isn't really the case. We grow plants and rear animals to get our basic requirements of food. Growing plants is better known as agriculture, and rearing of animals is known as animal husbandry. Now let me ask you an important question. People speak of improving agriculture and animal husbandry. They also talk of techniques that help us increase productivity of the land. Rich fodder is provided to animals so that they give more milk. What are all these efforts aiming at? What is the need to do so? The answer is pretty simple. We need to improve our food resources in order to meet the growing needs of human beings. We also need to remain healthy and strong with a better supply of nutrients. Better? Increasing needs? What am I exactly hinting at? It is quite known to us that the number of human beings is on the rise daily. The demand for food is ever increasing. In such a situation, what do? Can we keep cutting down trees for food? Do we have enough land for cultivation? The answer is a big no. So what is the only way out? We can use intensive techniques of agriculture and cattle rearing. What do I mean by intensive? We use a small land to its fullest. We have several crops grown in a span of 1 year. We also add nutrients and reuse the same piece of land. But wait, haven't we already begun all this? Aren't humans creating techniques to have an intensive yield from a piece of land? Yes, we are, but even after such techniques, we are not able to provide enough for the growing population. There is shortage of food and other resources. People are poor and cannot afford to buy the grains stored in our granaries. Let us look at the other side as well. Aren't we damaging the environment while we are using a piece of land several times? Fertilizers damage the crops and the organisms in the soil. Other intensive techniques too damage the environment. What will we be learning in the topic improvement of food resources? We would mainly be looking at improving food production, but at the same time, not damaging the environment. Now, next we are having here the wider adaptabilities. What are the wider adaptabilities?
वाइडर एडाप्टेबिलिटीज का मतलब होता है कि कोई भी क्रॉप्स किसी भी सीजन में प्रॉपर तरीके से सर्वाइव कर सके, दैट इज कॉल्ड हियर द वाइडर एडाप्टेबिलिटी। अगर इस तरीके से वेराइटीज इंप्रूवमेंट अगर हम लोग करते हैं सो क्रॉप्स के लिए या फिर इवन फार्मर्स के लिए इट विल रियली इंपॉर्टेंट फॉर देम, ओके, इट विल रियली हेल्प फॉर देम, ओके। सो वाइडर एडाप्टेबिलिटी हमेशा एक तरीके से हमको क्रॉप्स में एक तरीके से प्रॉपर इन्वायरमेंट और प्रॉपर सर्वाइवल्स के बारे में डिफरेंट पॉइंट्स को नोटिस करता है। सो विद दिस पॉइंट्स दे आर जस्ट कंफर्मिंग द डिफरेंट सर्वाइवल्स फॉर देयर डिफरेंट survival for their different terms and technologies, okay. Next is here desirable agronomic characteristics. What do you mean by here desirable agronomic characteristics? Desirable agronomic characteristics means what? Ki the characteristics which are based on the agro-based agriculture, okay. Agro-based means what type of fertilizers, what type of manures quality we are using here, so that the quality of soil can be properly क्वालिटाइज और द प्रॉपरली मतलब जो इनकी क्वालिटीज होगी वो क्या हो सके प्रॉपरली इंक्रीज हो सके, ओके, सो दैट वी कैन गेट द प्रॉपर डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स सो दैट द अमाउंट ऑफ fertility or the process of fertility can be increased in the soil, or the varieties of the plant production or the rich in nutrients can also be increased in order to survive for a new production of the plants or new production of the vegetables, fruits, etc. ठीक है, तो अलग अलग वेजिटेबल्स डिजायरेबल ग्रोथ करने के लिए डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्रीज करने के लिए मतलब एक तरीके से एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब व्हाट, ये एग्रो बेस्ड जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी कि एग्रीकल्चर से लेकर हमारे पास जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है उन फीचर्स को हम लोग मॉडर्नाइज करके उस फीचर्स को हम लोग एलोबरेट करके प्रॉपर टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज में हम लोग किस तरीके से डिफरेंट क्रॉप की वेराइटीज को इम्प्रूव करके एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग यहाँ पर इसको कंसिडर कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड हियर इज द क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, ओके। सो ड्यू टू दिस इसी की वजह से हम लोग यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट फैक्ट्स और डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स को मतलब अलग अलग क्रॉप्स की वैरायटीज को हम लोग यहाँ पर इम्प्रूव कर। Crop variety improvement. For improving the yield of crops, it is very necessary to select good quality seeds of plants with following characteristics: resistance to diseases and pests, response to various inputs like irrigation, fertilizers, etc., resistance to drought and frost, better quality and higher yield. Incorporation of superior characters. The desirable superior characters in a variety can be incorporated through various methods of genetic improvement of crops. These methods include hybridization, mutation, polyploidy, DNA recombination technology, etc. Hybridization involves crossing of genetically dissimilar plants. The crossing may be intervarietal, interspecies, or intergeneric. Intervarietal is the crossing between different varieties of the same species. Interspecies involves crossing between two different species of the same genus. Intergeneric is the crossing between different genera. Out of these three, intervarietal hybridization is extensively used in plant breeding programs. The introduction of new varieties of wheat coupled with higher inputs of fertilizers, irrigation and pesticides led to a record production of wheat in our country. This breakthrough in cereal production is known as Green Revolution. The objective of crop improvement differs in different crops, but there are certain common objectives for the improvement of different crops. These are as follows. Improved yield. The primary aim of varietal improvement is to improve the productivity. This can be achieved by developing high-yielding varieties. Better quality. The better quality agricultural produce always has a higher demand in the market. The quality consideration of crops varies from crop to crop. Resistance to biotic and abiotic stresses.
Crop production can be significantly increased by developing varieties of the crop which have resistance to stresses. Early and uniform maturity. Early maturing varieties and uniform maturing varieties of crops reduces the cost of production and makes the harvesting process easy. Photo and thermo insensitivity. Development of insensitive varieties to light and temperature helps in cultivation of these varieties in the areas having different light and temperature conditions. Desirable agronomic traits. Development of crop varieties with desired economic trait helps in increasing productivity. For example, tallness, tillering, and profuse branching are desirable characters for fodder crops, while dwarfness is desired for cereal crops. Wider adaptability. Development of crop varieties which have wider adaptability enables us in stabilizing the crop production under different environmental conditions.